Namaskar dear students. In the previous video lesson we learned what is a paragraph and what is the basic format of a good paragraph. So let me just tell you in brief how we can define a paragraph. Well, a paragraph is a group of sentences and these sentences are not random sentences, means they are not scattered sentences. Rather they are organized around a central topic. यानी एक पैराग्राफ कुछ सेंटेंसेस का समूह यानी ग्रुप होता है. ये सेंटेंसेस किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और उनमें एक क्रमबद्धता यानी प्रॉपर सीक्वेंस होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ पैराग्राफ कुड बी अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिमिलर आइडिया. And of course, organized and well structured and coherent. So, through this definition, we can assume कि एक पैराग्राफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस एक ही आइडिया से रिलेटेड होते हैं और उन सेंटेंसेस में एक क्रमबद्धता और तारतम्यता और प्रॉपर सीक्वेंस होती है. एक प्रकार से हम पैराग्राफ को एक मिनी ऐसे कह सकते हैं. जिस प्रकार एक ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, उसी प्रकार एक पैराग्राफ को भी उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट पार्ट इज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड इन अ पैराग्राफ दैट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय अ टॉपिक सेंटेंस. इसके थ्रू हमें ज्ञात होता है कि यह पैराग्राफ क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किसके बारे में है या इस पैराग्राफ का क्या उद्देश्य है. द सेकेंड पार्ट प्रोवाइड्स द कंट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन एंड दैट इज यूजुअली डन बाय द सपोर्टिंग डिटेल्स. दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ दैट पैराग्राफ. और एक ऐसे के स्ट्रक्चर की तरह ही पैराग्राफ में भी लास्ट पार्ट होता है कंक्लूडिंग, दैट इज टू ड्रॉ अ कंक्लूजन. इन फैक्ट यह वह पार्ट है जिसमें टॉपिक सेंटेंस को फिर से इन्फोर्स करते हुए संपूर्ण पैराग्राफ को कंक्लूड किया जाता है और समराइज किया जाता है. दिस इज व्हाट वी स्टडीड इनिशियली. नाउ लेट्स नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ देयर आर एंड हाउ वुड यू क्राफ्ट अ गुड पैराग्राफ. दैट मीन्स किसी एक अच्छे पैराग्राफ में कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. So, the main focus of this lesson would be to understand what are the type of paragraph, and I believe when you will understand these concepts, they will help you out in writing, in crafting a good paragraph. You know, having knowledge about what are the types of paragraph is one of the most essential aspects while writing a paragraph. As this knowledge will help you out in which direction you should move while writing that paragraph. Suppose it's a descriptive paragraph, so you need to describe the things. इसलिए पैराग्राफ के टाइप्स की बेसिक नॉलेज से पैराग्राफ लिखते समय उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. So let's know what are the main 4 types of paragraphs that you need to know about. The first one is descriptive. Second, narrative. Third, expository. And fourth, persuasive. Well, now let's understand in detail what are these types of paragraph. You know, the descriptive type of paragraph is that describes the topic and displays the reader what is the subject included in it. In terms selected in the description type, usually appeal to the 5 senses of touch, smell, sight, sound and taste. This type of paragraph can be more artistic and may vary from grammatical standards. यदि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में देखें तो वर्ड डिस्क्रिप्टिव से तात्पर्य है presenting observations about the characteristics of someone or something. And to describe means to represent or give an account of somebody or something in words. Descriptive से तात्पर्य है वर्णनात्मक.
सो वी कैन से एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वह पैराग्राफ है जो कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भावना को समझकर लेखक उस पैराग्राफ राइटर के दृष्टिकोण या आउटलुक से उसे प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार के पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, यानी वस्तुनिष्ठ, और जजमेंटल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन दैट द ऑथर टेक्स। इसमें पूर्णतया यह ऑथर पर, राइटर पर निर्भर करता है कि उस पैराग्राफ की टोन ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। द सेकेंड टाइप ऑफ पैराग्राफ इज नैरेटिव टाइप। यदि सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस टाइप के पैराग्राफ में अमूमन किसी स्टोरी को नैरेट किया जाता है। That includes a sequence of topic sentences like a clear start, middle of the topic, and an end to the paragraph. प्रकार के पैराग्राफ के एग्जाम्पल्स में हम उन पैराग्राफ्स को इंक्लूड करते हैं जिसमें पैराग्राफ राइटर किसी घटना, किसी इवेंट का वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से like my first journey by plane, my first day at college, and I believe you must have written a paragraph on the picnic. So these kinds of paragraphs are narrative paragraphs. The third kind of paragraph is expository paragraphs. It can be pronounced both ways, expository in British and expository in American. Such kinds of paragraph define something or give instruction. This kind of paragraph may also explain a process and influence the reader step by step via a form of the method. This expository para usually needs research, but also it's possible to rely on the writer's own knowledge and experience. If we translate this term expository, that means अर्थ प्रकाशक या व्याख्यात्मक is another Hindi term for this, and that is प्रतिपादन विषयक। इससे कनेक्टेड जो मुख्य बात है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं या फिर ऐसे विषय पर जिस पे कुछ रिसर्च की गई हो, या ऑथर अपनी नॉलेज को भी इसमें शेयर कर सकता है। The fourth type is persuasive type of paragraph, and this kind of paragraph seeks to make the audience to admit a writer's point of view or know his or her position. You know, persuasive paragraphs are often used by the teachers because it is beneficial when building an argument. Also, it makes a writer to research and collect some facts on the topic. So, how to write a persuasive essay or paragraph? So, for that you need to do research and try to understand the audience. इस प्रकार के पैराग्राफ्स को लिखने के लिए राइटर के द्वारा अपनी ऑडियंस को जानना आवश्यक है। इसके साथ साथ उन्हें मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंसेस देना भी आवश्यक है। In that case only the writer can persuade his or her audience. There is an important point to remember that a paragraph can be used to describe or explain an endless variety of things. हम यह नहीं कह सकते कि पैराग्राफ सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ की और भी टाइप्स हैं, वैरायटीज हैं, and it depends on what the author writes in that paragraph. Whatever the type of paragraph you are writing, it's important to know how to use each paragraph type for the right purpose. In this way, पैराग्राफ की इन 4 टाइप्स को समझने से हमें यह हेल्प मिलती है कि जो टॉपिक हमने अपने पैराग्राफ राइटिंग के लिए सिलेक्ट किया है या हमें प्रोवाइड करवाया गया है, in which category can we put that topic, and accordingly we write the paragraph. It is the descriptive. यदि आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें आपको एक डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग मैनर में पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट और फीलिंग को डिस्क्राइब करना होगा, जो भी आपके पैराग्राफ का मुख्य विषय है। चूंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप के पैराग्राफ एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं और विद अ स्पेसिफिक गोल और पर्पस लिखे जाते हैं, दैट्स व्हाई इसमें ऑथर का पर्पस होता है रीडर को वह फील करवाना, वह एक्सपीरियंस करवाना
जो वह डिस्क्राइब कर रहे हैं. So in a way, these paragraphs should be with pictorial quality and should graphically describe the scene, person or thing, whatever they are dealing with. In this lesson, we have understood main 4 types of paragraphs. Now in the next lesson, I will give you some tips for structuring and writing good paragraphs. And along with this, we will also know more about the elements or characteristics of good paragraphs. See you in the next lesson. Bye for now. Thank you for joining. Happy learning.